Assalamu alaikum class. I hope and wish that you all are doing well, and I'm here once again with a new topic of discussion. This is lecture number 10. We have already discussed 9 lectures, and hopefully your study is going well. So let's see what is your today's topic. So today's topic is organizing information for study. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी स्टडी के हवाले से. So the ability to determine main ideas and locate details is the key to all of these basic study techniques. तो आपकी जो सलाहियत है अपने मेन आइडियाज को लोकेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, वो बेसिक टेक्निक्स हैं आपकी. So how you are going to prepare your information, organizing them. So let's see what is the next slide, that what new it gives us. There are 5 study skills. Here we are going to discuss that: marking and annotating text, making textbook, underline or highlighting topics, main ideas and important definitions. The next is annotating textbooks, writing explanatory notes and symbols in the margin. So we are going to study something that is very new to you, making and annotating text. कैसे होता है, कैसे आप चीज़ों को एनोटेट करते हैं और कैसे एलेबोरेट करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको फर्दर. आगे फर्दर टेक्निक्स हैं that will help you to organize your information and ideas. So there are different things, that marking textbook and annotating textbook. These techniques will help you. How will mark your textbook and annotate your textbook? These are the techniques that will help you not only in your BS class but in future as well, wherever you will go to study. Note taking from text. How you can take notes from text. आप कैसे टेक्स्ट में से नोट अपने नोट्स बना सकते हैं. एक लंबा टेक्स्ट होता है और कैसे आप उसको अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट विल बी हेल्पफुल एंड प्रिसाइज एंड इन अ शॉर्ट विल बी योर exams preparation. On separate paper, creating your own personal record of information from the text. मतलब आपके पास एक बहुत लंबा सारा पेज है, टेक्स्ट है, जिसको पढ़ने में, एनालाइज करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी पेश आ रही है. तो एक सेपरेट पेपर पे आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड और नोट्स बना सकते हैं. जो मेन आइडियाज हैं उनको निकाल के अपने पेज पे बुलेट फॉर्म्स में या पावर पॉइंट में पॉइंट्स बना के आप उसको शॉर्टन और प्रिसाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आउटलाइनिंग. आउटलाइन कैसे बनाएंगे आप? स्पेसिफिक वे ऑफ organizing main ideas and details on the page to show the relationship between them. एक अलहदा पेजेस पे एक खास वे में आप मेन आइडियाज ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसकी डिटेल्स में जाते हैं पेज पे, उनका रिलेशनशिप शो करते हैं आइडियाज का और डिटेल्स का आपस में. So these things obviously aid you in your organizing notes and outlining and note taking from text. These are the techniques. Please write and read them carefully so that you will be able to organize your information for your study. Next is mapping. An informal way of organizing main ideas by using boxes, circles, lines, arrows, etc., also called a study map, learning map or concept map. मैपिंग क्या होती है? एक इनफॉर्मल वे में अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, उसके आइडियाज़ को, जिसमें आप बॉक्स बना लें या कोई सर्कल बना लें, लाइंस कर लें या तीर के निशान से अक्सर आप
इंडिकेट करके अपने नोट्स बनाते हैं. So there are certain ways you can adopt, and obviously you can adopt the way that you feel easy. So also called a study map. इसको study map भी कहते हैं, उसको learning map भी कहते हैं, और इसको concept map भी कहते हैं. इसकी techniques different है. तो जो आपको easy लगता है, and you can adopt that way. And next is summarizing. Condensation of the main ideas presented in a longer selection written in your own words. कुछ चीज को कंसीडर करना, मेन आइडियाज को प्रेजेंट करना, एक लंबे सेक्शन में लिखना, एक डिटेल्स में लिखना अपने अल्फाज में, उसे समराइज कहते हैं. ऑब्वियसली आपने जो समरीज एंड अक्सर उर्दू में खुलासा लिखना होता है, पढ़ने होता है, ये सब कुछ पढ़ा है आपने स्कूल में. So summarizing is quite the same thing, but you have to write it in your own words. लेकिन आपको अपने अल्फाज में लिखना होता है, ना कि as it is कॉपी करके सेम अपने पेन से आप लिख देंगे. That is not going to work. So summarizing is something else that you have to write in your own words. You cannot copy and copy paste those words usually that you do in your assignments that I checked in the previous week. Obviously some of the, in fact most of the students copy paste that and submit it. So summarizing in something else should not copy paste. You have to write in a longer section in your own words. Next is marking a textbook. बेसिकली आपको बताता है कि टेक्स्ट बुक को कैसे मार्क करना है. अक्सर आप टेक्स्ट बुक पे मायने और उनके मीनिंग्स लिख देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं मेन टेक्स्ट. तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट वेज, बट इधर टेक्निक्स बताएंगे कि व्हाट आर द टेक्निक्स एंड अ वे ऑफ मार्किंग अ टेक्स्ट बुक. टू अवॉइड ओवर मार्किंग इन टेक्स्ट, रीड, थिंक एंड देन मार्क. Obviously over marking तो नहीं करनी चाहिए. Then first read the text, then think about it and then mark. उसको carefully पहले पढ़ें, फिर उसके बारे सोचें. Use your mind and use your wisdom and then mark that line or text, whatever it will be. The next is underline or highlight stated main ideas, sentences and important definitions. आप हाईलाइट करें और अंडरलाइन करें मेन आइडियाज को जो सेंटेंसेस में हैं, या फिर इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप यू मे हैव, इफ यू मे हैव हाईलाइटर, यू हाईलाइट देम. ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू एंड एड यू टू फर्दर व्हेन यू स्टार्ट स्टडी इट अगेन. द नेक्स्ट सर्कल और बॉक्स की टर्म्स. आप सर्कल कर लें जो अहम अल्फाज होते हैं, टर्म्स होते हैं जो उस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनको आप मिक्स नहीं कर पाते हैं, या उसको बॉक्स में डाल दें. Obviously that will suit you further that if you study or rewrite or reread again. Remember to number supporting details. Often you find numbers and dates on the text, so obviously you have to remember them or highlight them or circle them in different ways. So remember to number supporting details. जहाँ भी dates और numbers और इस तरह की चीज़ें हों उनको याद करें, ज़रूर याद करें या फिर highlight करें. there are different ways, the techniques हैं, आप you can adopt that. उसको उसी वे में आपने लेके चलना है. Next is annotating our textbook. Annotate कैसे करना है अपनी टेक्स्ट बुक. Write topics beside paragraphs, formulate or write implied main ideas, write out important definitions or use step. Put question mark by things you don't understand and use an asterisk to signal over all main ideas, summary statements and conclusions. Write X beside important examples
Add numbers and letters to create outline from headings and subheadings. हमेशा ही पैराग्राफ के बिल्कुल बिसाइड आपने अपने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. नेक्स्ट को फॉर्मुलेट करें और इम्प्लाइड करें मेन आइडियाज के साथ उसे. एंड देन यू कैन राइट एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और यूज डेफ. हमेशा जब भी डेफिनेशन आप लिख रहे हैं किसी चीज के ऑन अ टेक्स्ट बुक, तो फिर उसको DEF लिख के आगे फर्दर उसकी डेफिनेशन लिखे. दिस इज द वे एक्चुअली. एंड हमेशा ऐसी चीजें जिनके बारे आपको नहीं समझ आ रही, आपको पता नहीं है वो है क्या, एंड हमेशा उसके सामने सवालिया निशान लगाएं. एंड देन यूज एन एस्टेरिस्क टू सिग्नल ओवर मेन आइडिया. अब जो सेंट्रल मेन आइडिया है उसके ऊपर हमेशा आप एस्टेरिस्क इस्तेमाल करें. जो समरी है, अगर स्टेटमेंट है या फिर इनको कंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको एस्टेरिस्क से सिग्नलाइज करें. नेक्स्ट, राइट एक्स बिसाइड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. कोई अहम आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप उसकी मिसाल दे रहे हैं, तो इसके पहले EX लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल लिखें. दिस इज द एक्चुअली a way of annotating a textbook. These are the techniques that help us in a different ways. Add numbers and letters to create outlines. हमेशा नंबर और लेटर्स ABCD या फिर 1 2 3 4 ऐसे ऐड करें आउटलाइंस बनाने के लिए. फ्रॉम हेडिंग से, या फिर उसकी सिर्फ अब सब हेडिंग्स हैं तो उसको लेते हुए आप नंबर्स और लेटर्स ऐड करें. ऑब्वियसली दे आर 1 2 3 4 5. अब इसमें 7 टेक्निक्स हैं एनोटेट करने की टेक्स्ट बुक को. Now read them carefully and then annotate your textbook according to these points and techniques. The next is outlining. How you can outline your text. Outlines are beneficial when dealing with complex material. When you need to condense material or get an overview. And the next is to show the relative importance of each part of the material. The less important the material, the further to the right it is intended. Outlines can be formal, Roman numerals and letters, numbers, or informal numbers, letters, dashes, bullets. So there are different ways of outlining. So आप तो beneficial होता है outline. अब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर रही हैं, परप्लेक्स कर देती हैं आपको, तो उसके लिए आपके लिए आउटलाइन ज़रूरी है. आप उसको समराइज एंड प्रिसाइज कर सकते हैं और उसका ओवरव्यू ले सकते हैं उस टेक्स्ट का बाय आउटलाइनिंग द टेक्स्ट. फिर उसका रिलेशनशिप शो करना होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच पार्ट. जो हमेशा हिस्सा, कोई भी हिस्सा है, उसका मटेरियल के साथ रेलिवेंसी क्या है. सो द लेस इम्पोर्टेंट द मटेरियल, अगर वो कम अहम है आपके लिए, तो फिर उसको ज्यादा फर्दर आप लिखना होता है. राइट इंटेंडेड जो कि इंडिकेट कर रहा होता है आपको. नेक्स्ट, आउटलाइंस कैन बी फॉर्मल. वो फॉर्मल वे में हो सकती हैं, रोमन न्यूमरल्स हों या लेटर्स में ABCD में नंबर्स में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इनफॉर्मल वे में हो सकती हैं. There are different ways and you can adopt and select and choose your own way that is helpful and easier for you. And informal, obviously, that can be numbers, letters, dashes, bullets. अब डैश बनाए, लेटर्स में लिखें ABCD, नंबर्स में लिखें 1 2 3 4 5, बुलेट्स बना के लिखें. So there are different ways that you can adopt. The next is note taking from our text. टेक्स्ट से अपने आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, that is very important and that is crucial for you, and this slide is very key for you. There are many note taking formats. Obviously there are different formats. A popular one is the Cornell format. You know, everybody you know about that Cornell format, because we have discussed that in previous classes, previous lectures, that you have to
separate your page and divide it into 3 parts and write something that is important in one part, other than is non-important in the next page, and you can relate them. Cornell method, that you have know that already, we have discussed that. Rule of 2 or my see view column on the left side of the page. हमेशा ही 2 और 3 ये मेथड है, कॉर्नल मेथड, जो आपको बताया लेफ्ट साइड ऑफ द पेज आप लिखना, टेक नोट्स इन आउटलाइन फ्रॉम इन द लार्जेस्ट पेज टू द राइट ऑफ द कॉलम। जो आपके नोट्स होंगे, आप जो बड़ा हिस्सा डिवाइड किया है पेज का, तो आपने उसको लार्जेस्ट पेज में राइट साइड पे कॉलम में लिखना होता है। The next is, when you have finished taking notes, fill in the review column with question or clue words. Yes, जब आप ख़त्म कर लें अपना नोट्स बनाना, तो आप एक अलग से, जो कॉर्नल मेथड में एक थर्ड कॉलम बनना होता है, उसमें आपने क्वेश्चंस लिखे और क्लू वर्ड्स लिखे, जो क्लू देते हैं आपको, जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में वो लिखे, एंड देन you can hide them with one hand and you can memorize those answers that you have in your mind. That is where you know how prepared you are, how good you are, how good your memory is. That will help you to how you can prepare yourself for study. A review column is exposed. Obviously जो review column है उसको expose करना है और एक को hide करना है। Cornell method में आपको पहले discuss कर चुका हूँ। There are 3 parts on the page, and एक में आपने important चीज़ें, दूसरे में important चीज़ें जो कम less important है वो लिखनी है, एक में questions लिखने हैं। Obviously आप जो important information आपने ली है आप उसको hide कर लें with your hand, and question पढ़ें और उसका जवाब खुद से memorize करें, उसको बोलें, और आपको पता चलेगा how you can prepare yourself better and how prepared you are, how good you are with these notes. Next is note taking. Obviously it continues on this slide as well. Read each question or clue words and use it to trigger your recall of the corresponding information. Yes, यही आपको डिस्कस कर चुका हूँ। क्लू और जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करें जो ट्रिगर करें, आपको रिकॉल करें, कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन जो आपकी है आप उसको रिकॉल करें और देखें आप कितने प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट, इफ यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन और से द मटेरियल लाउड, अनकवर इट, reread it, cover it up and try again. Yes, अगर आपको नहीं समझ आ रहा एक क्वेश्चन तो फिर आप अनकवर करें एक दफ़ा, फिर उसको बाद दोबारा पढ़ें उस कॉलम को, देन यू कैन कवर इट अप अगेन, और उसके बाद दोबारा कोशिश करें। and recite it until you can say it from memory. तब तक पढ़ते रहें जब तक आप अपनी मेमोरी से उसे ना कह सकें कि मैंने ये बेहतर कर लिया, ये मैंने बना लिया, अब मुझे याद हो गया। तब तक आपने रिसाइट करना है उसे, until you can say it without looking or don't know it. तब तक आप उसको रिसाइट करें जब तक आप उसे देखे बगैर आप खुद से जवाब न दे पाए। Obviously ये टेक्निक है जो आप we are discussing right now. And the Cornell method works because it incorporates reading, writing, reciting, and hearing. Utilizing these together makes memorizing more efficient. Cornell method एक बेहतरीन वर्क करता है वो आपके लिए। Incorporates reading होती है, उसमें राइटिंग, रिसाइटिंग, हेयरिंग, यूटिलाइज दिस टुगेदर मेक्स मेमोरी। सारों को आप इकट्ठा करके यूटिलाइज करके मेमोरी में डाल सकते हैं, जो एफिशिएंट बना देगा आपको। नोट टेकिंग obviously it's an art and these are techniques. If you know that, you can be able to take good notes. Next is outlining. Outlines can be sentence outlines or topic outlines. Indent details on separate lines. If a line is longer than one line, continue it on the next line and align it with the first letter of the word above it. Give your outline the same title as the original material. Do not title it outline.
हमेशा आउटलाइन आपकी सेंटेंस आउटलाइन भी हो सकती है, टॉपिक आउटलाइन भी हो सकती है। डिटेल्स को हमेशा सेपरेट करें लाइंस में। तो अगर आपको एक लंबी लाइन मिली है तो फिर उसको अदर फर्दर जारी रखें, नेक्स्ट लाइन में उसको जोड़ें। द नेक्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अबव इट, और उसका जो पहला लेटर है उसके ऊपर आप लिखें, और उसकी अपनी आउटलाइन जो है उसको सेम ही टाइटल दें, उसका अपना अपना टाइटल नहीं देना है जो आउटलाइन का है। नेक्स्ट इज मैपिंग। मैपिंग वर्क्स विल फॉर Mapping works well for those who are more right-brained, artistic, intuitive, creative. Start by writing the topic of the overall main idea in a circle or box in the center of the page. Branch details out from the center. Use keywords, symbols, and pictures. Vary word size. Use color. Use capital letters. Practice and be patient. Redrawing your map helps you remember the material. मैपिंग एक्चुअली उनके लिए बेहतर होती है जो राइट ब्रेन होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, क्रिटिकल सोचते हैं, क्रिएटिव होते हैं। उनके लिए मैपिंग जो है वो it works well for them. Start by writing the topic overall, main idea in the circle or box in the center of the page. हमेशा सेंटर और बॉक्स और सेंटर ऑफ द पेज में, बॉक्स में, सर्कल में अपना मेन आइडिया लिखें जब भी आप स्टार्ट करें अपनी राइटिंग को या टॉपिक को या ओवरऑल मेन आइडिया को। उसकी ब्रांच जो है, उनकी डिटेल्स जो हैं उनको फर्दर मैप करता जाएं उस मिडल से आप डिफरेंट लाइंस में। उसके बाद कीवर्ड्स यूज करें, सिंबल्स यूज कर सकते हैं आप, पिक्चर यूज करें, तस्वीर यूज करें अल्फाज की, और उसके वेरी योर वर्ड साइज, अल्फाज का बनावट जो है छोटी बड़ी कर सकते हैं आप, छोटा और बड़ा साइज हो सकता है। कलर्स आप यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं मैपिंग में, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिस कैन बी पेशेंट, और प्रैक्टिस करें और उसके बाद ऑब्वियसली पेशेंस भी रखना है। ड्राइंग करें अपने मैप को, दैट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर द मटेरियल। वो ये बेहतरीन एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं और उसके बेहतरीन अपनी मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग। Summaries are an excellent way to prepare for essay test. Follow this procedure. Use the title of the original material as the title for your summary. Do not title it summary, and include all of the main ideas in the same order as the author presented them, and do not include details unless it is impossible to understand the material without them. Summary obviously एक बेहतरीन तरीका है, स्पेशली आप जब ऐसे टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। These are the टेक्निक्स और प्रोसीजर है जो आप फॉलो कर सकते हैं। हमेशा टाइटल जो है ओरिजिनल मटेरियल से आपने लेना है समरी का, कभी भी उसको समरी का टाइटल ना दें, ओरिजिनल मटेरियल से कोई वर्ड लेके उसका टाइटल बनाएं, कभी उसको टाइटल उसका समरी ना लिखें ऊपर। उसके बाद मेन आइडियाज उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, और जो मेन आइडियाज जो हैं उनको सेम ऑर्डर में लिखना जैसे ऑथर ने, लिखने वाले ने लिखा है। और उसके बाद ऐसी चीजें ना इंक्लूड करें उसमें जो डिटेल्स में चली जाए। तब तक आप कर सकते हैं जब आपको समझ ना आ रहा हो, अंडरस्टैंडिंग ना आ रही है मटेरियल की कि ये करना कैसे, तब आप डिटेल्स में लिटिल बिट जा सकते हैं, लेकिन इंक्लूड नहीं करनी होती इसमें डिटेल्स। And summarizing obviously continues on the slide as well. Do not add your own opinions or any information from other sources. कभी भी अपने ख्यालात और अपने आइडियाज जो है, इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी सोर्स से आपने हासिल किए हैं से, तो वो आपने ऐड नहीं करनी कभी भी समरी में जब आप समराइज कर रहे होते हैं उसको, अपनी ओपिनियन से अवॉइड करें। देन पैराफ्रेज द इंफॉर्मेशन एंड ऐड
transition words and phrases to make the meaning clear and the ideas flow smoothly. Yes, हमेशा जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी गई उसको पैराफ्रेज करें अपने अल्फाज में, फिर उसको ट्रांजिट करें, उसको मुंतकिल करें उसमें फ्रेज में, और ऐसे मीनिंग्स बनाएं जो आपके मीनिंग्स क्लियर हो जाएं, उसमें आपको आइडियाज अच्छे तरीके से समझ आने लगे और जो आइडियाज हैं आगे स्मूथली फ्लो करें ताकि आपको समझने में आसानी हो. नेक्स्ट इज द एज, ऑब्वियसली pointers from the coach. Experiment with the various study techniques to discover what works best for you. And developing study skills takes time and practice. To polish your skills, team up with a classmate and compare your notes, summaries, etc. In courses that are difficult for you, form a study group with other serious, motivated students. Preparing ahead of time and participating in a study group enables you to read, write, hear, and say the information, utilizing multiple sensory channels strengthens learning. Obviously एक्सपेरिमेंट करें खुद से, डिफरेंट टेक्निक्स को उनको डिस्कवर करें और वही हमेशा चुनें जो आपके लिए बेहतर है, आसान है, समझने में आपको आसानी होती है, वही टेक्निक आप अडॉप्ट करें. ऑब्वियसली जब आप स्टडी स्किल्स अपने आप में डेवलप करेंगे तो उसके लिए वक्त दरकार है, उसके लिए प्रैक्टिस दरकार है, तो उसको आप प्रिपेयर करने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करें और पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो टाइम लगता है चीज़ों को, ऑब्वियसली दैट वी ऑफन hear from the people that practice makes man perfect. तो प्रैक्टिस करें और उसके लिए इंतज़ार करें ताकि आप एफिशिएंट हो सकें. तो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए वैसे ऐसे क्लासमेट से ग्रुप बनाएं जो अच्छे पढ़ने वाले हों और उसके बाद कंपेयर करें अपने नोट्स उनके नोट्स से, फिर उनको मिल के समराइज करें. ऐसी टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी. ऑब्वियसली ऐसे कोर्स जो आपके लिए मुश्किल होते हैं तो फिर ऐसा स्टडी ग्रुप फॉर्म करें आप जो अच्छे सीरियस मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन उनकी अच्छी हो सकती है. ऐसे ग्रुप जो है आपकी हेल्प करेगा पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर पास ऑन करना है. तो यूटिलाइज करें अपनी सेंसरी चैनल्स और स्ट्रेंथ्स जो हैं आपकी लर्निंग की, वो आपको हेल्प करेंगे. दीज आर द टेक्निक्स दैट यू कैन say that helpful for organizing some information in your own way. And that is it for today. Thank you very much, class. I hope that you will discuss and ask questions in the discussion class. Hopefully you don't do that. I wish and I hope that you will be very concerned and will come in with good questions in your next discussion class. Thank you very much for your cooperation.